तो अगर हम सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट की बात करें और उसका अगर डिस्टेंस सन से बढ़ रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ क्वांटिटीज़ हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, वो कैसे चेंज हो रही है और वो क्यों चेंज हो रही हैं। सो ये पहली क्वांटिटी का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और ये डिक्रीज़ होती है और इसकी वजह यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती है। सही है, तो जिस तरह आपका सन से डिस्टेंस बढ़ता है, आप प्लैनेट और सन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वांटिटी इज़ ऑर्बिटल स्पीड। जो डिस्टेंस विद सन जिस तरह बढ़ता है तो ऑर्बिटल स्पीड कम होती है, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में होता है, जो उसको फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको सर्कल में रखने के लिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। सो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रही है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम हो रही है, इस वजह से उसकी ऑर्बिटल स्पीड भी कम हो जाती है। सो अब हम बात करने जा रहे हैं ऑन द एनालिसिस ऑफ प्लानिटरी ऑर्बिटल डेटा। सो फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स विच आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन, इसकी हम लोग लास्ट टाइम बात कर चुके हैं व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द निमोनिक ऑफ द प्लैनेट्स विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन। सो फॉर दीज प्लैनेट्स उनके डिफरेंट डेटा किस तरीके से, एंड हाउ डू यू explain as well as predict trends in that data. So first of all, we'll need to make a table and it's going to have these headings. So first off, we'll obviously have the planet name. So planet का नाम क्या है, how far is it from the sun, उसका orbital time कितना है, density कितनी है, temperature कितना है, और gravitational field strength in Newton per kg, how much is this. Now obviously because this is actual real-time data, so this table will almost always be the same. In fact, let me correct myself, it will always be the same. And that is this table. So for each of these, we'll be talking about the overall trend. अच्छा जी, so यहाँ पे हमारे पास planets लिखे हैं and also the distance from the sun. So MVEMJSUN, this is the mnemonic that we were discussing previously. Now for all of these values, for all of these things which are written here, orbital time, density, temperature, gravitational field strength, we'll be talking about how each of these variable changes and what could be possible explanations for these. So first off, let's start with the idea as was in the table, with the discussion on orbital time. Now if I go back up, so orbital time को अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि throughout this is increasing. Her value is larger than the previous value and it's increasing throughout, right? So orbital time, we can see that obviously as the distance from the sun increases, the orbital time is also increasing. So first off, let's just write this, that as distance from sun increases, orbital time, yeah, sometimes the examiner might also call this the orbital period, so this also increases. Now what could be a possible explanation for this? ऐसा क्यों हो रहा है? So now that we have concluded that as the distance from sun increases, orbital time भी increase कर रहा है, now we need to come up with a possible explanation for what we observe here. Now first of all, I would like you to remember something जो हम पहले पढ़ चुके हैं. वो ये idea था कि if I ask you what is keeping a planet in circular motion around the sun, तो वो कौन सी force थी जो वो force provide कर रही है which is keeping it in orbit. So your answer should be that it is the gravitational force of attraction between the sun and a planet which is keeping the planet in that circular orbit. और यहाँ आपको पता है कि like most of the forces that we have, like an electric force या magnetic force, similarly gravitational force का भी यही idea होता है कि ये जो force है, so the gravitational force of attraction, और जाहिर सी बात है we are talking about the planet moving, so this is the force exerted by the sun on a planet. This decreases with distance. सही है, तो ये फोर्स जो है ये कम होती रहती है. तो अगर हम एक प्लैनेट की बात कर रहे हैं, वन प्लैनेट विच इज़ रियली क्लोज टू द सन एज कम्पेयर टू अनदर प्लैनेट विच इज़ मच फर्दर अवे,
तो आपको पता है कि जो प्लैनेट दूर होगा उस पर यह फोर्स कम एक्ट कर रही होगी, राइट? सो द आइडिया इज दैट प्लैनेट्स फर्दर अवे are also moving slower, experience a smaller force, and hence move slower. अब ये इनके कोई फ़ायदे की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग एवरेज ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला याद करें, सो फॉर्मूला था v इक्वल्स 2πr/t. अगर मुझे यहाँ ऑर्बिटल टाइम की बात करनी है, लेट्स मेक दैट द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन. सो t इज़ 2πr/v. सो उनका रेडियस भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूर भी हैं, राइट? सो दे ऑल्सो हैव टू ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस and they are also moving slower. ठीक है? So both of these factors go toward making the time period as large as possible. ठीक है? तो ये idea है that since they also are covering a large distance and are moving slower, इस वजह से time period ज़्यादा है. Let's talk about the next one, which is density. अब अगर आप density के trends देखें, सो डेंसिटी के ट्रेंड में क्या है कि यहाँ से यहाँ 5427 टू 5243 ये थोड़ा सा कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा. सो यहाँ पे दिस इज़ नॉट ए वेरी वेरी स्मूथ सिनेरियो टू एनालाइज. इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसे दो चंक्स में ब्रेक कर देते हैं. वी ब्रेक दिस इनटू ग्रुप्स ऑफ 4. पहले 4 प्लैनेट्स विच आर द क्लोजेस्ट टू अर्थ, and then the other 4 planets which are the furthest away from the Earth. And how we talk about them is that all of these planets are pretty dense. So inka density is really high as compared to the other 4 planets. Inka density is very low. Now just to put things into contrast, आपको पता होगा कि the density of water is 1000 kg per meter cube. तो ये पानी से बस थोड़े से ही ज़्यादा dense हैं all of these. But then on the other hand, these are much denser in contrast. So we say this, that the 4 planets which are closest to the Earth, so MVEM, Mercury, Venus, Earth, Mars, all of these have really high densities, and we say these are rocky planets and small planets. Rocky क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि इनकी जो composition है, this is of a material which makes them very rocky. ठीक है? और इनका वॉल्यूम भी बाकियों के मुकाबले में, जो अभी हम आगे जिनकी बात करेंगे, देयर वॉल्यूम इज़ प्रीटी स्मॉल. सही है? तो ये साइज़ में काफ़ी छोटे हैं. ऑन दी अदर हैंड इनका मास भी तकरीबन, इफ़ यू कंपेयर विद देम, यू लुक एट द एक्चुअल वैल्यूज, तो इनका मास इन सारे प्लैनेट्स का इनसे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, लेकिन देयर डेंसिटी, देयर वॉल्यूम इज़ वेरी बिग. इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, विच मेक्स देयर डेंसिटी स्मॉल. ठीक है? अब नीचे जाते हैं और इनकी बात करते हैं about the density. So now we are talking about density. So what we'll say here is exactly what we were just talking about, which is that density of the 4 planets close to the sun is very high. And density of other 4 planets is low. Now what I'm about to write, ये थोड़ा सा ज़्यादा IGCSE में टेस्ट होता है, which is this idea that if we talk about the planets, so the first 4, Mercury, Venus, Earth, Mars, these are known as rocky and small planets. On the other hand, जो आपके बाकी के planets हैं, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, these are gaseous and large.
सही है. So the rocky part makes it have a higher density, and these are very small, so volume छोटा है, which makes the density high. इनका जो mass है is not as high as the volume should make it, but because they are very very large, so उसकी वजह से density कम हो जाती है. If you guys remember, then I'm talking about this formula here. Rho equals m over v. So for these planets, इनका mass थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, लेकिन volume बहुत ज़्यादा होता है. So this makes the overall fraction smaller, making the density also smaller. Let's go on to the third factor now. And if you look at your tables, the third factor in line is the surface temperature. So surface temperature किसका ज़्यादा है, किसका कम है, and what are possible explanations for this? Now even before going on to the official table, आपको ये चीज़ शायद पता हो from general knowledge कि Earth का जो distance है ये इतना खास distance है from the sun that this is just optimal for human life. ठीक है? Any further then all human beings would basically not be able to survive because of the heat. और अगर वो ज़्यादा दूर होते तो वो उस ठंड की वजह से survive नहीं कर पाते. That's just how the human body works. अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो टेम्परेचर 350 to 460 बढ़ा, फिर कम हुआ, 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 राइट? सो दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ नॉट वेरी यूनिफॉर्म, आई कैन से. दिस इज़ नॉट व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट, लेकिन बस यहाँ बढ़ा है और इसके बाद यूनिफॉर्मली कम ही हुआ है. ठीक है? सो यहाँ पे आई कैन सी दैट द टेम्परेचर थ्रू आउट इज़ डिक्रीजिंग as the distance from the planet increases. This is the explanation for it. This is, sorry, not the explanation, this is the trend that we observe. So जैसे जैसे distance बढ़ रहा है from the sun, surface temperature कम हो रहा है. अब ये इस तरीके से क्यों हो रहा है? Now for this you need to recall another thing जो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है और इसको और ज़्यादा डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे. So apologies, surface temperature is going to decrease, not increase. So let's correct that first. So surface temperature will decrease. Say this is the observation. Now to come up with a explanation for this observation. अच्छा, सो बैक इन थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी दैट लाइट जो है विच रीचेस अस इज़ कमिंग थ्रू द मेथड कॉल्ड रेडिएशन. कंडक्शन एंड कन्वेक्शन डू नॉट वर्क बिकॉज उन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. बट द थिंग इज़ दैट जो सन हमें एनर्जी देता है, सो दिस इज़ नॉट जस्ट लाइट, दिस इज़ एक्चुअली three major forms of radiation. So this is the infrared spectrum. So infrared में भी हमारे पास कोई energy आती है from the sun. There's also light, and there's also another one which is ultraviolet. और एग्जैक्टली मैंने ये जानबूझ के इस ऑर्डर में लिखा है बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास जो एनर्जी आती है मोस्ट ऑफ इट इज़ इंफ्रारेड, देन थोड़ा सा इज़ लाइट, और बहुत ही थोड़ा सा इज़ अल्ट्रावायलेट. ठीक है? सो दिस इज़ हाउ दी सन्स एनर्जी रीचेस अस. नाउ लाइट यू नो इज़ ऑब्वियसली व्हाट इनेबल्स अस टू सी. और अगर आपको साइंस में जनरली इंटरेस्ट है तो आपको ये पता होगा कि द वे द अर्थ इज़ पोजिशन्ड इन द सोलर सिस्टम इज़ that it's at a very precise position. If it was any closer to the sun, then human beings would not be able to survive because of the heat. And if it was any further away, तो ठंड की वजह से again they would not be able to survive. Now for this, I would like you to remember a diagram that we made when we were talking about what makes day and night happen on the earth. Just to refresh your memory really quickly, हमने ये कहा था कि भाई इफ़ दिस इज़ द सन एंड इफ़ दिस इज़ द अर्थ, तो हमें पता है कि यहाँ पे जब आपके पास ये लाइट आती है, सो द पार्ट विच इज़ रियली फेसिंग द सन, यहाँ पे आपके पास डे होता है, एंड देन द अदर साइड इज़ वेयर नाइट हैपन्स.
Now we just extend the same idea in some sense to the infrared region, क्योंकि infrared में जो आपके पास waves होती हैं, this is what is really making us feel hot. This is what keeps the temperature of the earth at an optimal level. तो हमें ये पता है कि जिस तरीके से अभी हमारे पास ये लाइट के साथ हो रहा था, if I take the earth or any other planet for that matter, if I take it a bit further away, तो अब इसके पास कम वेव पहुंच रहा होगा because the wave would also generally spread out. So yeah, so this is the first thing to remember, that less radiation is received as distance from the sun increases. So now that less radiation is received at a planet which is further away, इसका मतलब है कि अब वो उतना ज़्यादा heat उस तक नहीं पहुंच रहा होगा, and hence the temperature decreases as the distance of the planet from the sun increases. Alright, so this is the reasoning for why temperature decreases. So the simple answer is that less radiation is received as distance from the sun is going to increase. Okay? And obviously we are talking about infrared radiation here. Now in your table, if you look at it, the last entry is gravitational field strength. And ये जहन में रखें कि अभी जब हम gravitational field strength की बात कर रहे हैं, we are talking about the gravitational field strength of each planet. हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जो gravitational field strength sun की वजह से होता है, that's not what we are talking about. उसकी हमने कुछ हद तक ऊपर बात कर ली है, that as the distance from the sun is going to increase, the gravitational field strength of the sun at that planet is going to decrease as well. ठीक है? लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि हर planet का अपना gravitational field strength कैसे change होता है. So let's go back to the table. So for the table आपको दिख रहा है Mercury is the least, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ और फिर बढ़ा. So here as you can see, this is probably very difficult to make a conclusion about कि भाई ये क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, because it's increasing and increasing, then decreasing, then increasing by a large amount, then decreasing, then decreasing, then increasing. So यहाँ पे I would just like to leave you with one remark जिसका हो सकता है एग्जामिनर आपसे कभी इसके बारे में थोड़ा सा पूछ ले कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगर एक की ज़्यादा है दूसरे की कम है, why is this really happening? So the idea for this is that the gravitational field strength, इसका एक formula होता है जो अभी आपको नहीं पता, that is basically proportional to the mass of a planet and is inversely proportional to the square of the radius of the planet. ठीक है? So अगर एक planet है जो बहुत बड़ा है और अगर उसका mass कम है, so बड़ा planet, radius is more, mass कम है, so small g जो है ये भी इसका छोटा सा होगा. लेकिन if you have a planet which is a very high mass planet और इसका radius भी कम है, so उसका gravitational field strength ज़्यादा होगा. Now if we go back here and if we look at some of the special planets, let's say सबसे छोटे और सबसे बड़े small g's की बात कर लेते हैं. So Mercury has a really small gravitational field strength. Similarly, Mars का भी gravitational field strength बहुत छोटा है. So sometimes you might be asked to make conclusions on this. Now I obviously know कि ये planets का size कैसे change हो रहा है. हो सकता है examiner आपको कुछ और ऐसे planets है जिनके बारे में आपको ना पता हो. So you can say that probably अगर इसका small g इतना छोटा है, this could be because the mass is less or the size is very big. ठीक है? Or both of these. And then for a very large value, जैसे कि this one is Jupiter. So Jupiter में मैं कहूँगा कि भाई इसका mass भी ज़्यादा हो सकता है या radius कम हो सकता है, or it could be both of these as well. ठीक है? So this is how you can make comments on the analysis of planetary data. All right? See you in the next one.